Hello everyone, this is class 7th maths chapter exponents exercise 5a question number 10 we are going to start. This is the last question of this exercise. If 64 into 625 is equals to 2 raised power a into 5 raised power v, we have to find the value of a and b. As we have found the value of x and y in the previous question, in question number 9, in the same manner we will find the value of a and b, and after finding this then we will do the second part. So firstly we have 64 into 625 is equals to 2 raised power a into 5 raised power b. So what to do? We will factorize this number. एंड ओके वन थिंग मोर, इसको अब फैक्टराइज करना होता है ना, तो किस तरह से फैक्टराइज करना है मैंने इवन आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि फैक्टराइज करना है. बेटा अगर इसकी पावर ये इधर हमारे पास बेस 3 है ना, तो इसकी फैक्टराइजेशन 3 में ही होनी चाहिए. ओनली देन वी विल राइट इट इन द पावर ना. अदरवाइज अगर कोई और नंबर आ गया, सपोज अगर मैं 10 क्वेश्चन की बात करूँ, आई हैव 64, तो आई कैन राइट इट 8 इंटू 8, इट बिकम्स 8 रेज पावर 2. सो इन दोनों को फिर मैं कंपेयर नहीं ना कर पाऊंगी. ये मेरे पास रहेगा 8 की पावर 2, दूसरी पावर मेरे पास है कि 2 की पावर है. नाउ आई कांट कंपेयर द पावर्स. So when I will split, I need to keep this thing in my mind that the splitting of 64 must be in the base of 2. ठीक. Now we will factorize 64. We got this. And in the same manner we will factorize 625. That must be in the base of 5. Like this, right? Now we will write the powers. How many 2's are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we can write it 2 raised power 6 into. How many 5's are there? 1, 2, 3, 4. 5 raised power 4. Now see, we can compare it. Here we can write it. Even मैंने जैसे इसको split करके लिखवाया था ना, हम उसको वैसे भी लिख सकते हैं. 2 raised power 6 is equals to 2 raised power a. So value of a is 6 here. नेक्स्ट पेज टर्न करती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ बेटा. या नेक्स्ट है हमारे पास 5 रेज पावर 4 इज इक्वल्स टू 5 रेज पावर v. तो यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 4. We got the value of a and b. A is 6, b is 4. So we have done first question, first part of the question. We got a is equals to 6 and b is equals to 4. Now second part, 2 raised power b multiply 5 raised power a. We have to find the value. So we can write 2 raised power b. What is the value of b? 4 into 5 raised power value of a, that is 6. So we can expand it. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. I have already told how to expand. ठीक है, जो इसके इंट्रो के क्वेश्चन आए थे पहले 4 क्वेश्चंस, इन दैट क्वेश्चंस आई हैव टोल्ड यू. नेक्स्ट इज 5 रेज पावर 6 है, दैट इज 5 इंटू 5 to 5 into 5 into 5 into 5. 6 times we will write the 5. Now we will multiply, and after multiplication we will get this answer, 2,50,000, right? So that's all about your exercise 5a. Question number, I am repeating my words, question number 1 to 4 we have done during online class. 9 and 10 I have already sent. Thank you.